Hello student, good morning. Today we will discuss the error by application of derivative. Here error माने अर्थ होची wrong calculation. केमती derivative use करी केमती calculation करा हो later discuss. Function दिया है y equal f of x. जे कोन से गोटे function दिया है y equal f of x. यार तीन प्रकार error अछि गोटे होची absolute error, गोटे relative error और गोटे होची percentage error. Absolute error find out करिया पे derivative into derivative of function f dash x dx और dy सहित तार वैल्यू समान. relative error होची dy by y माने जोडे दिया है f of x और f dash x dx जोडे की absolute error find out करा है ताको हमें f of x रे डिवाइड कर देले देन लेट बट relative error बदल और एक कोन percentage error. Percentage error, how to find the percentage error? Percentage error can be taken by multiplying 100 with what? Relative error. Relative error को 100 में multiply कर then we'll get what? Percentage error. So now more about this we'll discuss. By using this formula we discuss problems from exercise here 4 and 5 two problems are there. Okay, 4 and 5. Then I will discuss this along with example 14 also. Here the example 14, page number 262. Okay, so now we will discuss one by one. A question of 4 from the exercise, you look at what is given here. Find the percentage error. Percentage error means EP. Find the percentage error of the surface area of the spherical balloon. Surface area of a spherical balloon. Spherical balloon means sphere. Spherical balloon of diameter D equal to 14.02 meter, where the true diameter 14 meter. So what is given, you will get here what given, what to find in detail we will discuss. So EP percentage error, we have to find the percentage error of a sphere of diameter. Here two diameter given. True diameter means this one you take what D. True diameter equal to D. Here another diameter given. Another diameter means diameter with some error. This one you take what D plus DD. DD means slight error in calculation of diameter. प्रकृत डायमीटर ट्रू डायमीटर केते 14 मीटर दिया है किंतु आमे रॉन्गली के मेजर कला को डायमीटर सहित आ किछ मिसिची दैट इज dd माने स्लाइट चेंज ऑफ डायमीटर. ओके, एक्चुअली केते डायमीटर dd इक्वल टू केते एटा होची 14, एटा होची 14.02, एटा रोटा माइनस करले dd एज दिबो. देन dd इक्वल टू व्हाट 0.02 मीटर. एटा रोटा माइनस कर दो, देन गेट दिस वन. सो dd कैन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. गोटे स्फीयर दिया है, गोटे स्फीयर रो सरफेस एरिया रो तार परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करा. वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर. सरफेस एरिया कार केते, कार स्फीयर रो सरफेस एरिया केते 4 pi r square. This is the surface area of a sphere. If r is the radius, instead of r you put what d. r पाखरे कोन d पुट करले एटी कोन आसो d by 2. d by 2 equal to r. So r square equal to d square by, so this is what d square by 4. Here 4 pi, 4 cancel. This is what pi d square. So what is the pi d square? Pi d square is the surface area of this sphere.
हेले तार हमें परसेंटेज एरर आना परसेंटेज एरर केमती आना देखिए परसेंटेज एरर हियर द फंक्शन इज कॉल्ड एस इज द फंक्शन एपटे डायमीटर होची वेरिएबल एटा एस होची फंक्शन एटा होची डायमीटर होची वेरिएबल तेणु करी हमें कोन करा बेटी ds by dt dt रो अर्थ होची with respect to d रे आर डेरिवेटिव फाइंड आउट करले केते आसीबो पाई इज अ कांस्टेंट एट d स्क्वायर डेरिवेटिव टू d then ds equal to 2 pi d dt by 2 pi d dt 2 pi d dt okay this is the ds means absolute error dy जिन लिखा है s रो absolute error होची कोनटा ds so ds केते असला कोन असला एटा absolute error पड़ेला so you look at now absolute error असला पर केमते आसीबो ds equal to so ds equal to 2 pi d dt. So now relative error er. Er equal to formula f dash x dy. it लिखा है जी dy by এটা ds लिखा है जी ना डी ds को s रे डिवाइड कर दो then get what relative error. So relative error equal to ds by s. So ds equal to what ds equal to here came 2 pi d dt divided by s equal to केते लिखा है जी s equal to pi d square so pi cot 1 of the d cot so remain 2 dt by d 2 dt by d so dt equal to it लिखा है जी dt what is the value of dt equal to 0.02 meter by into 2 is there into 2 by here d equal to 14 d equal to what 14 so got it then you get what 2 7 0.02 by 7 here meter square this one here meter written this is the meter square why it is the surface area so what asila it is relative error then we find what percentage error how to find the percentage error now get percentage error for percentage error ep equal to er into 100 so what is the er equal to this one 0.02 by 7 into 100 okay so 100 रे को मल्टीप्लाई कर देले केते आसला 2 ऊपर 2 रहला 2 by 7 मीटर स्क्वायर ओके इन परसेंटेज ep फाइंड आउट करला कोन हो परसेंटेज रे को पुट कराओ ep मींस परसेंटेज एरर so this is the surface area of percentage error ep equal to 2 by 7 meter square in percentage okay so in this way you find but this is the one of the application or also this type of question comes the 4 mark type question okay so next the similar geometrical problem for you I will discuss now get next question number 5 find the approximately the difference between the volume of the cube of the side 3 cm and 0.3 cm so what is given here look at 5 question number 5 find the approximately difference between the volume of the two cubes 3 cm and 3.0 two cubes dita cubes अछि गोटर साइड होची ऑफ साइड x सेंटीमीटर आ गोटे साइड होची x plus del x सेंटीमीटर ठीक है स्लाइड दीटे सेंटीमीटर डिफरेंस होची x equal to here it is given 3 centimeter here 3.04 centimeter this one so what about your del x माने x रो स्लाइट एरर एटा होची x equal to 3 आउट होची x plus del x equal to 3.04 so एदिटा डिफरेंस होची एटा एटा माइनस करले del x आसीबो del x equal to 0.04 centimeter cube then approximately difference approximately error means approximately error माने अर्थ होची EA अर्थ होची approximate error EA equal to कार approximately difference between the volume
आर वॉल्यूम रो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस माने वॉल्यूम होची कोनटा v इक्वल टू x क्यूब x क्यूब माने कोनटा दिस द व्हाट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब dv by dx equal to 3x square then dv equal to 3x square dx this came what approximately error पहले approximately error रो एटी वैल्यू पुट कर दवा x पाखरे 3 पुट कर दवा 3 स्क्वायर इनटू dx पाखरे del x dx equal to 0.04 सेंटीमीटर this सेंटीमीटर so this one equal to केते वॉल्यूम रो एटा सेंटीमीटर स्क्वायर रो कारण एटी x स्क्वायर so 3 into 3 square 9 27 into 4 27 into 0.04 cubic centimeter so केते एसवीडी आको मल्टीप्लाई कर दले 108 means 1.08 cubic centimeter this is what approximately changing of the approximately error in calculation of the volume first again you look at here the volume equal to x cube dv by dx एटा फाइंड आउट करला एटा dv टा पेपर रे dx टा सपोर्ट नेले एटा जोटा आसला approximately error this is the approximate error e equal to approximately error okay and to put the values you know x equal to 3 centimeter and del x equal to 0.04 given and we will have this one there question number 6 also this is also important for you so what is given you look at I will discuss question number 6 from the exercise the height of a regular cone is 3 times of its radius of base but a regular cone means what do you mean by the regular cone this is the regular cone माने यार both side height दिटा जदि same अछि this is what regular cone hey ji the height of the regular cone this is the height regular cone is 3 times of its radius of base यार radius टा जेटा radius टा let's say radius equal to x height equal to 3x given the height of a regular cone is 3 times its radius of base radius ro 3 times the radius of base was wrongly measured 5 centimeter a radius टा means radius equal to x is wrongly measured means error थाई r plus dr माने अर्थ होची r टा होची ट्रू रेडियस ता से तो मिस जो dr माने किछटा ता से तो मिसिंग अछि then r plus dr is the wrong measurement is 5 centimeter where the true radius r equal to 4.88 centimeter true radius means that is r wrongly measured r means r plus dr equal to 5 centimeter okay then we have to find the relative error in measuring the curved surface area आर कर्व सरफेस एरिया रो कोन फाइंड आउट करिया हमरो कर्व सरफेस एरिया रो रिलेटिव एरर ऑफ कर्व सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया माने अर्थ होची पार्श्व पृष्ठ तळ एरिया दैट इज CSA let you take this is what ABC triangle let BC equal to this BC equal to x centimeter you take x centimeter equal to what 4.88 centimeter okay this is the radius I know height AB equal to this is the height of the object is 3x okay this is the 3x AB you know this is the right angle triangle ABC is the right angle triangle so AC equal to root over AB square plus what BC square okay so this one instead of this you put what 3x square 3x whole square AB means what 3x whole square this is the 9x square so 9x square plus BC means x square root over this equal to root 10x so AC came root 10x this is what root 10x so what is the curved surface area curved surface area equal to CSA pi RL okay
curved surface area. Curved surface area C equal to pi RL. This is the formula. In class you have already discussed pi RL होची आरो curved surface area रो formula. आरो relative find out करा relative error first आमे absolute error आमे DC by एटी कोन होची आ RL दीटा अछि आगे दीटा जब आमे convert करदा x रे convert करदा. Pi is the constant. R equal to what? Radius equal to R equal to radius equal to x. X centimeter we have taken. This is R equal to x. L equal to root 10 x pi RL. So instead of this, you can also write what root 10 pi x square. This is what curved surface area. Now dc by dx. dc by dx. How by dx find out kara ho? Here is the variable x. So root 10 pi is a constant. Here 2x derivative is x square derivative 2x. Okay. So now dc by dx equal to this one. dc equal to dx टा सेपरेट वाले multiply जो root 10 pi 2x dx. dx and del x both are equal. You look at dr and dx এটা x নিয়ে আসবে মানে এটা কোন আসবে x plus dx. here dx equal to what? r equal to 4.88. r रे किछि dx मिसा आइछि मिसिले केते 5 आछि. so dx equal to केते 0.12. एटा रे माइनस कर दलो पळे आछो 0.12. okay. dc equal to this one. then we have to find what? relative error. relative error. how to find the relative error? now relative error ER equal to relative error ER equal to, so what here? relative error ER equal to formula dc by c. जेने dx by x लिखा होतला ये dx dc by c. dc equal to this one already given. you look at dc equal to root 10 pi 2x dx divided by c equal to root 10 pi x square. so cancel this one. root 10 pi cancel. then remains 1 x will also cut 2 by x dx. 2 by x dx. so instead of x you put what? x equal to 4.88. here 2 by 4.88 what? into dx equal to 0.12. simplify then we get your answer. can you simplify? here it is what? 0.24 by 4.88. this equal to you got decimal 2 places 24 by 488 you got. then you get what? here meter square. relative error. so relative error which unit nahi, you should not write this one. 24 by 488. okay. this one. so these are the few problems related to error. now we will discuss about the increasing and decreasing function. what is the increasing and decreasing function? I will discuss some introduction. Today we will discuss the introduction of the increasing and decreasing function. Later in detail we will discuss. okay. so now increasing and decreasing function. what do you mean by the increasing function? what do you mean by the decreasing function? today we will discuss more about this. okay. suppose here is the curve increasing and decreasing function. increasing and decreasing. increasing and decreasing function. so what is the increasing and decreasing function? let's see. what a function y equal to f of x. one of the function y equal to f of x where we plot on the curve graph.
So note it. Here y equal to f of x is the one of the curve given. A curve परे एमती गोटे पॉइंट अछि एटु गोटे होछि सबटु कम तार वैल्यूटा होछि कम एटी होछि ऑफ एटी होछि आउथरे डिक्रीज आसला एटी आउथरे इंक्रीज आसला एटी आउथरे डिक्रीज आसला द पॉइंट तळकु जोटा रहउछि दैट इज व्हाट डिक्रीजिंग वैल्यू जोटा ऊपर रहउछि दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग वैल्यू सो हाउ मेनी डिक्रीजिंग वैल्यूज एंड हाउ मेनी इंक्रीजिंग वैल्यूज आर देयर हाउ डू यू नो दिस वन ए कर्व परे केतरा पॉइंट अछि इनफिनिटी पॉइंट्स अछि केते थर से इंक्रीजिंग होची केते थर डिक्रीजिंग होची जानिया पे हम देखिए केमते डिस्कशन करिया द वैल्यू वेयर द फंक्शन अटेन द मोर वैल्यूज दैट इज व्हाट इंक्रीजिंग एंड लेस वैल्यू दैट इज व्हाट डिक्रीजिंग सो मोर एंड लेस वैल्यूज माने अर्थ होची कोन एठी हम जतो टेंजेंट ड्रा करबा एठी टेंजेंट ड्रा करबा एगुडा सब डाउनवर्ड डायरेक्शन ए पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करबा देन दैट गिव्स व्हाट अपवर्ड डायरेक्शन ए टेंजेंट गुडा को अपवर्ड डायरेक्शन आछो एपटे टेंजेंट ड्रा करिया अगेन इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन एपटे टेंजेंट ड्रा करिया देन यू विल गेट अपवर्ड डायरेक्शन एठी आउथरे अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन इट इज व्हाट अपवर्ड डायरेक्शन सो जोटी डाउनवर्ड रो अपवर्ड जोटी चेंज होसी जोटी डाउनवर्ड मींस dy by dx is the negative dy by dx is the negative less than 0 means negative जोटी डेरिवेटिव गोटे फंक्शन रो डेरिवेटिव नेगेटिव होसी नेगेटिव is there what decreasing जो dy by dx greater than 0 जो ऊपर को आसे सेठी कोन हो जे ऊपर जाउ मींस that is greater than 0 this positive जो नेगेटिव आसे कोन हो जे डिक्रीजिंग आसे जोडी पॉजिटिव आसे सेठी कोन इंक्रीजिंग आसे so here it is if y equal to f of x is any function for the derivative dy by dx is less than 0 means negative the function is negative sorry decreasing when dy by dx is greater than 0 means the positive then the function attain what increasing okay and increasing decreasing कोन बुझा पड़ा जोटी dy by dx ता कोन होची negative आसी then that is what decreasing function will get जो dy by dx is what less than greater than 0 that is what increasing function that positive आसला so here it is look at here the graph जो downward direction आसी से गुडा होची कोन नेगेटिव जो upward direction आसी tangent गुडा dy by dx means what dy by dx stand for the slope of the tangent जो slope गुडा नेगेटिव आसी सेठी होची decreasing तळ वाडो जोडी बॉडी जाउची means positive आसी जो बॉडी जाउची डिक increasing so this is the concept okay increasing and decreasing function रो एटा होची concept for example you look at गोटे problem करूची increasing decreasing रो suppose here it is given f of x equal to example you look at one of the example f of x equal to sin x here it is 0 to 2 pi x belongs to 0 to 2 pi x belongs to 0 to 2 pi एडी कोन कराबो एडी कोडी पॉजिटिव कोडी नेगेटिव जानिया पे फर्स्ट कोन कराबो आर डेरिवेटिव फाइंड आउट कराबो डेस x मींस द डेरिवेटिव ऑफ f of x sin x का डेरिवेटिव केते cos x ये जो cos x ता कोन होची फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव cos ता फर्स्ट क्वाड्रेंट माने 0 to 90 बंद पॉजिटिव देन सेकंड क्वाड्रेंट cos ता नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आउट पॉजिटिव so cos is negative means cos ता माने f dash x less than 0 sorry greater than 0 आगे देखिए greater than 0 means positive from 0 to 90 बंद ये positive आइसबो and आउटपुट आइसबो positive fourth quadrant रे cos ता positive fourth quadrant means 3 pi by 2 to 2 pi बंद ये positive हले dash x greater than 0 from एतिकी to एतिकी and एतिकी to एतिकी सेमती f dash x star नेगेटिव कुटु आसी सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आसी सेकंड क्वाड्रेंट कुटु pi by 2 to pi बंद नेगेटिव आसी आउडे एंड आउटपुट आसी नेगेटिव कुटु आसी कोडी नेक्स्ट नेगेटिव कुटु आसी था फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट pi to 3 pi by 2 बंद नेगेटिव आसी सो नाउ એટલે 2 to केती बंदे ये कोन आसला नेगेटिव रहला पॉजिटिव रहला फर्स्ट देखिया
So f of x तार डेरिवेटिव जो नेगेटिव है पॉजिटिव कोटू कहते एति भितर f of x is increasing हेले इंक्रीजिंग कोटू कहते कि 0 to pi by 2 बंदे इंक्रीजिंग आसला एंड माने यूनियन कर दवा हमें 3 pi by 2 to 2 pi बंदे इंक्रीजिंग आसला एति की बंदे इंक्रीजिंग आसला f of x ए जो फंक्शन कारण एटी होची पॉजिटिव अछि f dash x एटी कोन आछो डिक्रीजिंग कोटू नेगेटिव अछि जेटा होची डिक्रीजिंग कोटू गोटे आसला pi by 2 to pi to 3 pi by 2 pi एटा सेम रहि गेला एटा pi तेनो एटा मिसे देले कोडी आसीबो pi by 2 to 3 pi by 2 बंदे ये कोन आसला डिक्रीजिंग आसला और एटा को मध्ये हम लिखबे रे हमें -pi by 2 to 3 pi by 2 एटी मध्ये हम सॉरी pi by 2 plus pi by 2 मध्ये लिखबे इन लिखलो सो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग गोटे आगे कोन कराबो गोटे फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड आउट कराबो डेरिवेटिव डा कोन कराबो कोटू केति पॉजिटिव कोटू केति नेगेटिव अछि जणा पडिबो ताबे जुडी से पॉजिटिव आसे इंक्रीजिंग आसे जुडी नेगेटिव आसे सेटा होची डिक्रीजिंग आसे सो एटा होची गोटे फंडामेंटल आमे डिस्कशन करले लेटर मोर अबाउट दिस अलजेब्रिक फंक्शन आउ अन्य फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गुडा लेटर विल डिस्कस मोर अबाउट दिस सो वेरी क्लियर सो नेक्स्ट क्लास increasing decreasing ro continue रहिबो and more about this we will discuss okay today you practice all you practice what I have given okay the formula also you practice yes